Hello friends, welcome my YouTube channel Macrox Engineering. My name is Jignesh Rana. I am working as assistant professor in Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. Our college is affiliated to Gujarat Technological University Gandhinagar, Gujarat. Today I am giving a presentation on types of motion of the follower. Today my presentation outline is a displacement, velocity and acceleration diagram when the follower moves with uniform velocity and simple harmonic motion. So today we have discussed about two follower motion, uniform velocity motion and simple harmonic motion. Another two motion we will discuss in next videos. Now the displacement diagram, velocity and acceleration diagram of when the follower moves with uniform velocity. So shown in figure, the velocity diagram, acceleration diagram and displacement diagram. So shown in figure, first the base represent, it means abscissa represent the time, number of seconds required for the cam to complete one revolution, or it may represent the angular displacement of cam in degrees. In shown in figure, so abscissa represent, it means x direction represent the cam angles. Okay, one relation of cam, angular displacement. Okay, and y-axis displacement, velocity and accelerations. Okay, the ordinate represent displacement of velocity, acceleration of the follower. Since the follower moves with uniform velocity, during its rise and return stroke. So AB1 is a rise and C1D is the return stroke. In other words, AB1 and C1D must be in straight line. हमारा फॉलोवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ओके, सो ड्यूरिंग इट्स राइज एंड रिटर्न स्ट्रोक द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर्व मस्ट बी कांस्टेंट. ये हमारा जो स्लोप डिस्प्लेसमेंट वो कैसा है, कांस्टेंट रहेगा, सीधा ऊपर जाएगा और रिटर्न स्ट्रोक में सीधा नीचे आएगा. ओके, a little consideration will show that the follower remains at rest during the part of the cam rotation. Okay, so B1 C1 shown in figure is a dwell period and DV is a dwell period. At that period, the follower do not move in upward or downward direction. It means follower must be stable. It means there is no zero movement, zero displacement. Okay. The periods during which the follower remains at rest are known as a dwell period, as shown in line B1 C1 and D. The acceleration and retardation of the follower at the beginning and at the end of each stroke is infinite. Seen in acceleration diagram at the beginning and at the end of the stroke. So acceleration is infinite. This is due to the fact that the follower is required to start from the rest. Followers required start from the rest and has a gain of velocity with in no time. This is only possible if the acceleration and retardation at the beginning and at the end of each stroke is infinite. These conditions are however impracticable. यानी कि ये condition practice में नहीं है. Okay, so displacement diagram, velocity diagram and acceleration diagram. So in figure, velocity diagram is maximum where acceleration is infinite. Okay, now the displacement, velocity and acceleration diagram when the follower moves with simple harmonic motion. So first of all, if you don't know about what is SHM, it means simple harmonic motion. So I tell you that simple phenomenon, a simple way. Simple harmonic motion is defined as any motion which repeats itself after interval of time
इज नोन एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि एक पीरियोडिक मोशन है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो मोशन चलती रहती है। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वैसे बजाते हैं, गिटार बजाते हैं तो वो समय पे हर इंटरवल ऑफ टाइम पे वो बजता रहता है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ। ओके, जैसे अर्थक्वेक वाइब्रेशन, तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, सो एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ हाउ टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ऑफ द simple harmonic motion. So first I draw a semicircle on the follower stroke as a diameter. तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या करना है कि जो हमारे पास ये S, इट मीन्स आप देख सकते हैं जो स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर, इसको हम डायमीटर कंसिडर करेंगे और उसका फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये सर सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। देन डिवाइड अ सेमी सर्कल इनटू एनी नंबर ऑफ इवन इक्वल पार्ट्स, यानी कि हम इवन इक्वल पार्ट्स में उनको डिवाइड करेंगे, यानी कि 4, 6, 8, 10, 12। तो हमें मैक्सिमम 6 to 8 इक्वल पार्ट्स हमें करने हैं, तभी जाके हमारा जो कर्व है वो फॉलोवर का जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है वो स्मूथ आएगा। नाउ डिवाइड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैम। ओके, सो थीटा ओ द एंगल ऑफ ascent during out stroke and theta r angle of descent during return stroke. Okay, so divide the angular displacement of the cam during out stroke and return stroke into the same number of equal पार्ट्स। तो उसके भी हमें सेम इक्वल पार्ट्स करने, जितने हमारे सेमी सर्कल किए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं, तो थीटा हो यानी कि आउट स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक के जो एंगल के भी उसके कितने 8 इक्वल पार्ट्स दिए गए। नेक्स्ट फोर्थ, द डिस्प्लेसमेंट डायग इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्टिंग द पॉइंट्स। तो यहाँ पे पॉइंट कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे प्रोजेक्टिंग करेंगे? तो फर्स्ट फ्रॉम द सेमी सर्कल पॉइंट नंबर 1 से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। देन आफ्टर फ्रॉम पॉइंट 2 स्ट्रेट लाइन 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। देन नेक्स्ट एंगल ऑफ outstroke and angle of return stroke. It means outstroke during the outstroke and return stroke we have to draw a vertical line from respective point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now the intersecting point horizontal and vertical line 1, 1. We make a 1 point, then 2, 2, second point 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 7 and 8, 8. जैसे जैसे हम पॉइंट बनाएंगे we have to draw a curve लाइक दिस। आप देख सकते हैं जो पिंक कलर की लाइन ड्रॉ की है। ओके, सो ये से हमें सेम वे रिटर्न स्ट्रोक में भी हमको ऐसा ही करना है। ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हो गया। नाउ इन वेलोसिटी डायग्राम, सो मैक्सिमम वेलोसिटी एट द मिड स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर, आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन में मैक्सिमम वेलोसिटी at the mid stroke of the follower when zero acceleration is 0. When velocity is 0, acceleration is higher, maximum. Okay, same way in return stroke. So we have to draw a curve in velocity diagram as a sine curve. We have to draw a curve in velocity diagram as a sine curve, and acceleration is a cosine curve. Okay. Since the followers move with simple harmonic motion, therefore velocity diagram consists of a sine curve and the acceleration diagram is cosine curve. We have already discussed about the sine curve and cosine curve. The velocity of the follower is 0 at the beginning and at the end of each stroke, and it's increased gradually to maximum at mid stroke. On the other hand, the acceleration of follower is maximum at the beginning and at the end of the stroke and diminishes to 0 at mid stroke. जैसे कि मैंने आपको पहले ही फिगर में बता दिया था। ओके, सो एट द मिड ऑफ मिड स्ट्रोक वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन इज 0. एट द एंड, एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रोक एक्सेलरेशन इज हाई, मोर मैक्सिमम वेलोसिटी इज 0.
Okay, now let S is equal to stroke of the follower, theta 1 theta r, angular displacement of the cam during outstroke and return stroke of the follower respectively. Omega, angular velocity of cam. Now the time required for outstroke of the follower in second. So यहाँ पे हमें follower का time कितना है? Outstroke during the t0 theta angular displacement of the cam during outstroke upon angular velocity upon cam. S same as tr, angular displacement of return stroke theta r upon omega. Okay, so consider one point P moving at uniform speed omega p radian per second around the circumference of a circle with stroke as a diameter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्ट्रोक है उसका एक सर्कल बनाना है हमें. देन आफ्टर कहीं भी सर्कमफेरेंस पे कहीं भी कोई भी जगह पे आप एक पॉइंट पी कीजिए, पॉइंट पी बनाइए. उसकी जो वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा पी रेडियन पर सेकंड होगी इस पॉइंट पी की. ओके, नाउ द पॉइंट विच इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी ऑन द डायमीटर एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एज द पॉइंट पी रोटेट. जैसे जैसे हमारा पी पॉइंट रोटेट होगा तो क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. तो पी पॉइंट जैसे रोटेट होगा वैसे ही हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन हमको रिपीट होगी. द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज सिमिलर टू दैट पॉइंट पी डैश. नाउ फ्रॉम पॉइंट पी वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड दे इंटरसेक्ट ऑन द vertical axis of the circle. The point intersecting point name is P dash and that P dash point is similar to P. ओके, उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? उतनी ही होगी, ओमेगा पे रेडियन पर सेकंड जितनी ही होगी. ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन P कैसे इस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है, कभी फिर रोटेट होके फिर उसी जगह पे आएगा, तभी जाके वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा. नाउ द पेरिफेरल स्पीड ऑफ द पॉइंट P डैश. ओके, सो Vp, P और P डैश सेम ही है Vp, तो पाई एस अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन T0. नाउ यहाँ पे T0 की जो वैल्यू है थीटा ओ अपॉन ओमेगा, उसकी वैल्यू हम रखेंगे, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो 1 अपॉन T0 इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन थीटा 0 थीटा ओ. सो पाई एस अपॉन 2 इंटू ओमेगा अपॉन थीटा ओ. नाउ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर ऑन द outstroke VO is equal to VP, same है. So omega pi omega s upon twice theta O. Now we know that the centripetal acceleration of the point P. So square of the velocity of P point upon OP. OP means what? The radius of this circle, यानी कि stroke s by 2. Stroke by 2. Okay. So pi omega s upon twice theta O whole square upon 2 upon s. OP is equal to what? S by 2. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, तो 2 अपॉन एस देखेंगे हम. सो इज इक्वल पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू एस. एस एस कैंसिल हो जाएगा, सो एस स्क्वायर में से एस कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन 2 इंटू थीटा ओ स्क्वायर. सो हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी मिलेगी. ओके, और सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन भी हमको मिलेगी. Now the maximum acceleration of the follower on the outstroke AO OP same. ओके, एंड सिमिलरली मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर रिटर्न स्ट्रोक. यहाँ पे जस्ट क्या होगा, सब एंगल चेंज होगा, बाकी सब वैल्यू सेम रहेंगी. पाई ओमेगा एस अपॉन ट्वाइस थीटा आर एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ फॉलोअर ऑन रिटर्न स्ट्रोक ए आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन ट्वाइस थीटा आर होल स्क्वायर. ओके, सो today we have discussed two topics: displacement, velocity, and acceleration diagram when the followers move with uniform velocity and and simple harmonic motions. Okay, I hope you getting it. It is very important for the drone draw to cam profile. In next videos we have to discuss about next two follower motion. One is the uniform acceleration retardation and second and last one is the cycloidal motion. Okay, so thank you. Stay home, stay safe. Please subscribe my channel. If you like, please share it. Thank you very much.